Just watch your breath as it flows easily in and out of the body. This precious breath, which is always in the here and in the now. Bring yourself to this present moment. Bring yourself to now, which is all there really is. It is all that exists. The past is only a memory. The future is only an imagination. And between the memory and the imagination is the reality of the here, of the now. We are fooled by this illusion of time. If we watch a movie, we see each frame going by, and it gives the illusion of the passage of time. But actually, no time passes. There is only the now, in which the entire film is all present. Just be with this breath, experience the breath as it flows easily in and out of the body, effortlessly, automatically, automagically. The breath flows. Just keep on watching this breath as it flows in and out. Drop any thoughts that come from the past. Drop any thoughts that come from the future. Just bring yourself and be in this here, this now.
And as you watch the breath, ask yourself the question, what is that which is watching the breath? What is it? Notice that what is watching your breath right now has always been there. Thoughts come and go, people come and go in our life, objects come and go in our life, experiences come and go, feelings come and go, sensations come and go, perceptions come and go, all experiences come and go. But this experiencer has never come and has never gone. Just be in the presence of this presence which has always been present. If I were to ask each one of you to speak about yourself, you would have different stories to tell, different descriptions. Our heights are different, our color of skin may be different, our voice is different, our facial features are different, our thoughts are different, our opinions are different, our education is different, the languages we speak may be different, our skills are different, our wealth is different, our knowledge is different, our preferences are different, our choices are different. So we have very different descriptions of ourselves at this level of the body and the mind and the person. But if I were to ask you to describe this presence which is experiencing your body mind, which is experiencing your life, if I were to ask you to describe that, we may use somewhat different words, but they will all mean the same thing. You would describe this presence as formless, shapeless, colorless, sizeless, limitless, timeless,
So, at this level of the experiencer of your life, the experiencer of my life, the experiencer of each of our lives, the, the descriptions converge, the descriptions come to the same thing. Description would include, maybe in different words, but it would talk about calmness, it would talk about peacefulness, it would talk about acceptance, it would talk about joyousness, it would talk about creativity, it would talk about beauty, it would talk about truth, it would talk about love, talk about acceptance. So just marvel at this beautiful understanding of this one same presence, emerging, emerging into this universe, in fact, forming this universe and showing up as so many different forms, so many different colors, so many different shapes, sizes, thoughts, opinions, expressions, experiences, and yet all coming from the same oneness. If your description of who you are and my description of who I am and her description of who she is and his description of who he is all say the same thing, then why would we think that it is not the same thing? It is much more understandable that if we all describe and the description is the same, we must be talking about the same thing. This is what is meant by oneness. This is what is meant by I amness. That when we go to the deepest levels of I am, you, me, she, he, they, it, all arrive at the same point, all arrive at the same place, all arrive into the same space, all arrive into this same field of open, infinite potential, open, infinite field of nothingness from which everything arises.
And while we can celebrate our differences and enjoy this variety, what would be the quality of our experience if this oneness, this sameness, this nothingness, this everythingness was in the foreground rather than in the background? What would be the quality of life on the planet if we were to recognize and live by this oneness, this presence? What would be the world like if there are actually no others? What would be the condition of the planet if we see that every tree, every blade of grass, every insect, every animal, every life, every object also traces its origin and its true being back to the same place, the same space, the same field that you trace yourself to? We live as separate entities and celebrate oneness. Instead, what if we lived as oneness and celebrated this separateness? All that would remain would be to simply love and celebrate this entire journey of life. So soak yourself, drench yourself, drown yourself in this sky of nothingness, this vast space that you are. Completely fill yourself with it, because in fact it is already you. And soaking yourself, drowning yourself in this, slowly start to bring your awareness, your attention back to your breath, back to this created magical world of sound, sights, touch.
but remain soaked in this oneness, remain soaked in this divinity, even as you emerge from this ocean of love as a separate human. Let your body, your thoughts, your being still be filled, just as when you emerge from a river, your body is still dripping, drenched in that water. Allow this beingness to be with you. And slowly open your eyes and come back to this relative world which you have created. So I wanted, okay, just slowly open your eyes and come back. And if you can, turn on your videos. Pandey ji, namaste. अच्छा वंदना जी भी है नमस्ते great, great. Amruta, hello. Hello, sir. Good evening. Good evening. So before I forget to tell all of you, for before we meet next time in a week, I want you to write a letter, two letters, two letters. Okay. So one letter will be from your inner child to you. This is a letter from you as a pick an age, whatever is most memorable, something between the age of 4 and less than 9, 4 to 10, maybe, somewhere in that age, or 3 to 10, anything. Just pick any age that comes to you. Put yourself into that child's body, which was your body at one point, and then write this letter to you now, talking about your experiences, your dreams, your wishes, your regrets, your joys, your sorrows, your pain, your love, whatever. Just write. And then the second letter, I want you to write from you to that child. So second letter is from you to that inner child, which is still present. What would you say to this inner child, knowing what you now know? And write both letters from your heart, not from your intelligence, but from your heart. The poets in our family are free to write the letters in poetry form. Percy और पांडे जी मौजूद है, but not necessarily. Whatever, you can add a poem also if you like, from the child to you and from you to the child, but also a letter. Okay, everyone clear on the home play for next
next week. So great. So now I want to just hear from each one of you what is uppermost in your mind, and what is the uppermost in terms of challenge, in terms of a question, in terms of whatever, in whatever area of life. What is the uppermost thing that is going on in your life? अपरमोस्ट तात्पर्य हाँ, तात्पर्य जो, या तात्पर्य जो आजकल जो भी आपके मन में चल रहा है, आजकल जीवन में, मन में सिर्फ नहीं, जीवन में जो भी चल रहा है, व्हाट इज द मोस्ट, मन में जो सबसे पहले क्या बातें चल रही है आजकल? तो जस्ट आई वांट यू टू टेक 1 minute or 2 minutes each, share what that is, and no, share on speaking, not on text. And as you share, connect it with what we spoke about, connect it with this contemplation about what is the true nature of you, who you really are. उसके साथ connect करिए, क्योंकि unless we make that connection, so knowing what you know from today's contemplation, what you have experienced, what do you have to say about whatever that uppermost challenge or thought is in your mind? Okay, great. So Sonal, you already put something, but so you can unmute and speak. Sir, I have health challenges, but I don't know how to connect. Correct. So you have health challenges. I didn't Okay. understand the question. No, so the question is, speak about whatever is going on. So you're saying what's going on in your life right now are health challenges. So now, Yes. knowing what you know about who you really are, what does that perspective, what does that understanding, or what does that knowledge, what light does that throw on your health challenges? Which knowledge? The knowledge that that experiencer of your life, including your health challenges, that experiencer is everything that we spoke about, is the oneness. Knowing that, what light does that throw on the health challenges? Okay, you think about it. Sir, Let's, I don't know. I don't know to answer. it's okay, it's okay. So you think about it while somebody else, few people more can share. શું ચાલે છે? क्या चल रहा है? क्या हो रहा है जिंदगी में? हाँ हाँ पांडे जी, चलिए। आ, क्या बताएं, जिंदगी जो है ना वो पर्सनल लेवल से कहीं ज्यादा ना आउटर वर्ल्ड ज्यादा असर कर रहा है दिलो दिमाग पर। राइट। जैसे मैं वॉकिंग जाता हूँ तो जो भी देखता हूँ ना, प्रकृति का विनाश हो रहा है चारों तरफ। तो अब जब मैं उसको मेरे इतना ज्यादा अटैच्ड महसूस करता हूँ मैं नेचर से, प्रकृति से, कि मुझे लगने लगता है कि क्या किया जाए कि लोगों में ये अवेयरनेस आ जाए, जागृति आ जाए। मतलब मैं आए दिन ना कुछ लिखता रहता हूँ। जैसे कि आपने कहा मैं कवि हूँ, शायरी या कुछ दो लाइन उसका राइट फोटो लूंगा, उस पर कुछ लिखूंगा, लोगों को अवेयरनेस देने के लिए कर जाऊंगा। वो मुझे बेचैन करता है बहुत ज्यादा। राइट राइट तो ये है जो चल रहा है आजकल, बहुत ज्यादा चल रहा है मेरे दिमाग में। ऐसा कोई राइट। काम नहीं सो होता। वन थिंग आई विल सजेस्ट टू यू इज
whatever you are creating like this, आप WhatsApp group में post करिए. See, anything that any of us creates or writes, that is priority number 1 for posting. दूसरों लोगों ने लिखी हुई बातें, दूसरों का कोट, ये वो पोस्टिंग सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रायोरिटी. आपको अगर कुछ महसूस हुआ है, आपको अनुभव हुआ है, आपको कुछ ख्याल आया है, कुछ आपने फोटो ली है, जो भी है वो आप जरूर पोस्ट करिए. दैट इज प्रायोरिटी नंबर 1 इन द व्हाट्सएप ग्रुप. ओपन डोर. राइट, सो गो ऑन. ओके. Second thing, not second, rather simultaneously, this Ukraine war, this should end. My God, it disturbs me. This Russia Ukraine, this should now stops. Enough. Not enough, rather. It's more than enough. Much more than enough. It's already too much. Yeah. It's not just enough. It's already too much. Yeah. और उसमें तो इस वाले पहले वाले में तो मैं कुछ करना भी जो चाहता हूँ करूंगा, और आगे भी मैं इस बारे में मेरे दिमाग में ऑलरेडी कुछ चल रहा है जो प्रकृति का नेचर का मैंने कहा. लेकिन उसमें पता नहीं, मुझे लग रहा है कि हम क्या कर पाएंगे. असहाय महसूस करते हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, देख रहे हैं, बट वी आर हेल्पलेस. राइट. सो ओके, आई हियर यू. तो अभी जो हमने बात की, with our closed eyes we were contemplating our true nature of that we are all connected. Every plant, every tree, every person ultimately comes from that same place, that same energy, that same oneness. तो ये जानकर, ये जानते हुए क्या प्रकाश आता है, इस जो बातें जो दोनों आपने की, वो दोनों बातों पर उसका क्या क्या प्रकाश लाता है? सच कहूं तो किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता हूं. और दूसरे स्तर पर बस कई बार ये लगता है कि जो हमने सीखा है, वननेस जो आपने बताई, जो मेरे दिल में सदा विद्यमान है, शायद उसी वननेस के चलते मैं ये को अनुभव कर पा रहा हूँ. ये जो आई कैन एक्सपीरियंस that situation whatever is existing over there. और उसका फायदा ये हो रहा है कि मैं जो अपने स्तर पर कर सकता हूँ, एटलीस्ट मैं उस दिशा में मैं कर रहा हूँ. और बाकी लोग, मैं उनके प्रति एक थोड़ा वो करुणा का भाव आता है कि प्रभु, उन्हें नहीं मालूम कि वो क्या कर रहे हैं, और चूंकि दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, एक दिन आएगा कि वो रियलाइज करेंगे. राइट. और ये वननेस की जो समझ है, अगर व्यापक होती तो क्या जिस स्केल पे हम ये प्रकृति का जो विनाश कर रहे हैं वो करते क्या? बिल्कुल नहीं करते. अपने आप ये व्हेन वो जो बाइबल में वगैरह में कहीं कोट है, यू नो, डू अनटू अदर्स एज यू वुड बी डन बाय. मतलब दूसरों के प्रति आप ऐसा वर्ताव कीजिए जो आप चाहते हैं वो आपके साथ करें. बट when you understand that there is no others, so do unto others, तो others ही कोई नहीं है, तो फिर ऑटोमेटिक वही हो जाता है कि ऑटोमेटिक आप वही करते हो जो आप अपने आप के साथ करते हो. आप अपने आप को सुबह उठकर गोली तो नहीं मारते. तो ये बात अगर समझ में आ जाती है कि there are no others and that oneness, then there is no space for war. There is no need even to teach somebody that, oh, don't do this, this is not good, or this is not right, or you should behave the way you would like to be behaved.
वो सभी बातें बताने का मतलब कोई ज़रूरत ही नहीं रहती, because you don't see any difference between you and them, and you simply give them your best because you give yourself your best, and everyone is yourself. Great. So yahi, this is the most powerful thing we can do, apart from writing letters, ये करो, शायरियाँ लिखो, कविताएं लिखो, फोटोज करो, अवेयरनेस बनाते हैं हम, but the deepest awareness that we can create, which will have an immediate and direct and powerful impact on all of this, whether it's the environment or the war, the deepest and most powerful impact is the understanding of oneness. उसके बाद बंदा अपने आप ही वो करने लगेगा जो हम चाहते हैं, उसको समझाने की, बताने की, शायरियाँ सुनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको ही खुद लगेगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ. So this is why this knowledge, this understanding is urgently required. We have only one planet as far as we know right now. तो इसको संभाल के रखना, बचाए रखना, it's very important, and this is the most powerful thing. Spreading this understanding of oneness is the highest service that you can give to this world and to nature. So invite family, friends, invite strangers. Strangers को ये लिख के दे दो, ये लिंक. Strangers भले ही नहीं पहचानते, क्या हो गया उसमें, आप आइए. Everyone is welcome, regardless of anything, because everyone is one. तो अगर दोस्तों को कह के आप थक गए हो That's true. या दोस्तों और रिश्तेदारों को कह के थक गए हो, तो स्ट्रेंजर्स को बता दो. जिसे सबसे ज्यादा सख्त जरूरत है इस सत्संग की, वही इस सत्संग से पता नहीं क्यों और अपने आप को अरे यार मत फंसाओ यार, मत फंसाओ मुझे, मत, बस यार, वही तो उनको रहने दो अभी फिलहाल. जो नहीं, जिसको कोई ऐसी, neither they have a preference nor they have anything, they don't even know anything about it, उनमें ये बांटते जाओ. Maybe make a card of open door with the link and the time, or at least the WhatsApp group. Just give it out to anyone and everyone, to hundreds of people, thousands of people. Great. Who else would like to share? हाँ, पुरुषोत्तम जी. ये एक वीक पहले का मतलब मेरा एक्सपीरियंस है. लेकिन मैं एक एजुकेशनल बॉडी से, ऑर्गेनाइजेशन से अटैच हूँ. करीब 30-35 साल पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, 12 लोग अब हैं उसमें. तो एक हफ्ते भर पहले उन लोगों ने, और मैं उसमें एक मतलब बोल सकता हूँ कि सबसे ज्यादा एक्टिव, या मैं एक मतलब सेंट्रल फिगर हूँ. तो मैक्सिमम चीजें मैं करते रहता हूँ, और सारे लोग साथ भी देते, मतलब कोई एक्टिवली देते, कम लोग एक्टिवली, लेकिन वैसे भी सपोर्ट करते हैं, मॉरली बोलो या अपने प्रेजेंस के साथ में. उन लोगों ने मुझे एक लेटर लिखा एक वीक के पहले. उसमें बहुत सारी कंप्लेंट्स थी. अच्छा. मतलब आप ऐसा नहीं करते, आप टाइम पे ये नहीं करते, वो नहीं करते, आपने जो भी मैनेज किया है, जैसे मैनेज करते हैं, आप किसी को बताते नहीं, और फंड्स के बारे में, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज है उसके बारे में, चैरिटी कमिश्नर्स के जो वर्क्स है उसके बारे में, हर एक के बारे में ऐसे 10-12 पॉइंट्स में लेटर लिखा. और आखिर में लिखा कि हम जानते हैं कि आपकी मतलब आपका मन अच्छा है, आप अच्छे ढंग से करते हैं, लेकिन ये सब जो चीजें आप ऐसे ढंग से कर रहे हैं, उससे हमारे मन में बेमतलब डाउट आ रहा है. तो वो लेटर में लेकिन 10 पॉइंट जो उन्होंने लिखे, उसमें हर चीज में ऐसा था कि मेरी जो पहली रिएक्शन थी कि अरे ये सारी चीजें मैं कर रहा हूँ, पूरा समय देख के और एक्टिविटी कर रहा हूँ, इसमें से कोई कुछ पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, फिर भी ब्लेम मुझी को रख रहे. ये मेरा इमीडिएट रिएक्शन था. करेक्ट. और
मेरा जो बहुत नजदीक का दोस्त है मेरे बाजू में बैठा था, मैं बताया भी उसको, लेकिन वो बात करते करते फिर मैं हंसने लग गया जोर से। बोले क्यों, क्या हुआ? बोला आपने मुझे ये लेटर में दूसरा कुछ दिख रहा है। और ये हर चीज में जो बता रहा हूँ ये फैक्ट है, मतलब मैं लाइव जिया हूँ इसको। मैं हंसने लगा, बोला गोविंद भाई ये तो आपने इसमें बीच का उनको उनके सामने वर्ड यूज किया। मैंने बोला इसका सबटेक्स्ट तो किसी के ख्याल में नहीं आया हमारे। तो बोली इसमें और क्या है, सब तो सामने सामने लिखा है और सारा ब्लेमिंग और सब ये है वो है। मैं बोला वो सब लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं और वो मांग क्या रहा है, बोला वो सिर्फ मेरा अटेंशन मांग रहे हैं। और मुझे ये दिख रहा है कि वो एक्चुअल में ये प्रेम मांग रहे हैं। और ये जैसे बोला ना मैंने, तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। करेक्ट। मैं बोला ये एक्चुअल में मैं इन लोगों की अपेक्षा क्या है कि हमको आके बताए, पूछे, हम लोगों से शेयर करे। राइट। और मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं कर रहा हूँ और मैं हमेशा बोलते रहा कि जिस किसको जानना है मीटिंग में आओ, मैं बताऊंगा। आप घर पे बैठे हो, मैं आके नहीं बताने वाला। ये मेरी अकड़ थी जो मुझे समझ में आई। उस दिन मुझे लगा ये लेटर लिख रहे, आखिर में लिख रहे कि आप पे विश्वास है, सब है, और फिर भी हमारे दिल में बेमतलब एक ख्याल आ रहा है। करेक्ट। मतलब ये खुद भी कन्विंस नहीं है। करेक्ट करेक्ट। और वो जो कुछ भी कंप्लेंट है हर चीज में मैं दूसरे ढंग से पढ़ता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई कुछ मुझसे बस एक ही चीज मांग रहा है, और वो है प्रेम और अटेंशन एंड अटेंशन। लव। या और उसके बाद फिर वो लेटर लिखने के बाद में उसका मतलब इंतजार था उन लोगों को कि आप 2-3 दिन में उसका रिप्लाई दीजिए। तो मैंने उसके बाद ये किया कि हर एक के घर पे गया, एक एक के। और घर पे जाके मैं बोला मैं राइटिंग में कोई रिप्लाई नहीं दूंगा, आपने हर किसी ने जो बोला वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मैंने किया है सब, लेकिन आपसे कम्युनिकेट नहीं किया। सॉरी, मैं आगे से ये सब करूंगा। उसका असर ये हुआ कि 2 लोगों से बात करने के बाद में बाकी लोग बोलते कि अरे ये सब बंद करो, बोले अच्छा नहीं लग रहा, हमको गिल्ट महसूस हो रही, बोले कि हमने क्या लिख दिया। करेक्ट। और उसके बाद जो रिलेशंस हुए हैं, मतलब पिछले हफ्ते में, तो वो ऐसा लग रहा था 10 दिन पहले कि ये बॉडी अब कैसे डिस्पर्स होती है, क्या होता। राइट। तो वो जो जितनी यूनिटी पहले कभी नहीं थी उतनी अभी महसूस हो रही है। ब्यूटीफुल, वंडरफुल। और ये एक्चुअल में इसी का एक ये है। और हर बार मतलब जैसे वो कंप्लेंट कर रहे हैं, उनकी कंप्लेंट पढ़ रहा हूँ, तो मेरा राइट मतलब मेरा जो एक लिमिटेड सेल्फ है वो भी मुझे दिख रहा है, और बिगर इसमें भी मुझे दिख रहा है। और जब ये दोनों चीजें मैं एक साथ में देख पा रहा हूँ ना, मतलब तो वो छूट गया मेरा जो लिमिटेड सेल्फ है, मेरा जो रिएक्शन थी, मेरा जो बोलना था, वो सारा छूट गया। और इतना कंपैशन और इतना भरा, मेरे बराबरी वाली थे उनको मैंने गले लगाया, बड़े थे उनके पैर पड़ा, बोला आपको सबको लग रहा है ना, ये सब मैं करूंगा और मेरी गलती हो गई। और उसके बाद मतलब मेरे बोलने के बजाय 2-3 लोगों के मतलब ये कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं हो सकता, लेकिन 2 लोगों के आंखों में आंसू आया, बोले हमने क्या सोच के लिखा, तो बोले आप कौन से ढंग से ले रहे हो उसको। ब्यूटीफुल। तो ये ओपन डोर का ही कमाल है में। वंडरफुल वंडरफुल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। ग्रेट ग्रेट। आपने मेरी जिंदगी में सचमुच बहुत कमाल किए। थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। और यही दैट इज व्हाट कीप्स मी एंगेज्ड। ग्रेट ग्रेट, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सो दिस फैमिली लेवल पे भी 3-4 एक्सपीरियंस ऐसे है, मैं मतलब बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है, फिर कभी शेयर करना चाहूंगा। वो भी करेंगे, श्योर श्योर। ग्रेट ग्रेट। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो हम ये यहाँ समझते हैं, जानते हैं, देखते हैं, उसको जीवन में कैसे लाएं। हाउ टू ब्रिंग दिस नॉलेज into our day-to-day life, into our interactions, into whatever somebody says or you say or do. How to make this background into the foreground. That is the whole sadhana, lifelong sadhana that we are all engaged in. Wonderful. So anyone else wants to share, or we will Himanshu bolo. जी आज का जो एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं, जो मेडिटेशन का, it was just a wonderful experience and beyond the mind.
बट मीनवाइल जो मेरा मेडिटेशन चल रहा था तो बीच में थोड़े टाइम के लिए मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया एंड मेरी जो आउटर लाइफ थी उसमें चला गया एंड देन आफ्टर अगेन विथ अवेयरनेस आई कम बैक तो आई फील कि अरे शिट ये मैंने क्या मिस कर दिया जेन्युइनली आई फील दैट कि मैंने मिस कर दिया एंड जब भी ये वननेस का जो सेशन में अटेंड करता हूँ तो देन आई फील माई सेल्फ बहुत सारा मतलब कि चेंजेस महसूस करता हूँ और दूसरे दिन किसी के भी साथ इंटरेक्शन होता है तो इट विल बी ऑटोमेटिकली क्रिएट्स ए different. डिफरेंट Automatically, it is different. फिर उसके Yeah, लिए मुझे कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ता तो correct. That is the beauty. That is the आई fun. फील It दैट कि ये जो वननेस वाला जो प्रिंसिपल है तो अगर हम वो प्रिंसिपल में समझने की बजाय अगर जीना शुरू कर दे then life becomes a wonderful and bless itself. So every day I'm practicing and try to living that and principle. living that. Beautiful. That's it. Beautiful. Thank you. Thank you. Thank you Thank you. so Thank much. you. Great. Most welcome. Wonderful. Um,